Bismillahirrahmanirrahim. I think it's high time we should start our session. A good number of people have joined. I think around 57 ने join कर लिया है, तो हम शुरू करते हैं. So I welcome you to our CNE session, जिसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि we have people from all over Pakistan, from Karachi and from all the chapters of PNDS in different cities of Pakistan. आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है and it's a bit different from the usual CNEs we have been conducting so far because I hope I'm audible to everybody because I have unmuted myself. Yes, you are. Thank you so much. So this is going to be a very interesting topic and CNE because usually we have topics related to the clinical dietetics side. And we get a lot of presenters or speakers जो कि हमारी clinical nutrition के ऊपर बात करते रहते हैं. जबकि अगर हम देखें nutrition और dietetics का scope तो ये बहुत widen है और इसमें food industry में इसका एक बड़ा ही unique सा और बहुत ही एक अच्छा रोल है जिसके अंदर एक बहुत ही एक अच्छे तरीके से dietitians या nutritionists अपना रोल प्ले कर सकते हैं. And so we have a very profound member of our fraternity, Miss Ambreen Altamash, and she has been working in food industry since quite a lot of years, and she's quite an expert on this topic. She has done her MSc Foods and Nutrition from College of Home Economics and then her postgraduate diploma in dietetics. And currently she is leading the health and wellness department in Nestle, Pakistan since many years. And she has a very rich experience in food industry, which you will be able to see very well enough in the coming hour. और ये है कि इनका माशाल्लाह मिले भी हम इनसे हैं तो बहुत ही अच्छा knowledge है. And I was really looking forward to this session because we are going to learn something new today, inshallah. So over to you, Ambreen. Thank you so very much, Shifa, for such great introduction. I am really honored and extremely overwhelmed with the choice of words you've made. And at the same time, I welcome all of you. Assalamu alaikum, everyone. And I hope that we'll have a good session today, inshallah. I'll try my level best to disseminate the knowledge from the industry where I am in for last 14 years now, mashallah. And all thanks to, the good, the teachers, the institution where I belong. And I am extremely thankful to the people जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मुझे इतना capable किया that now, alhamdulillah, by grace of Allah, that I am heading the health and wellness department of one of the most renowned food and beverage company, that is Nestle Pakistan. So with this intro and with Allah ka naam shuru karke hum start karte hain. So I am Ambreen Altamash. I am Nutrition, Health and Wellness Manager. So before we delve deeper into the slide, let's just to let you know that what does these three words, nutrition, health and wellness, means to Nestle. Now, Nestle, as you all know, is not a conventional food and beverage company. And I've been in this company, and the best thing that I liked is that I'll be able to practice these three words called nutrition, health, and wellness. And let's just go explore the slides, that what are some of the information and some of the stuff जो कि हमारी जो dietitians हैं और nutritionists हैं जो कि माशाल्लाह you guys are so capable, you're so young, and you have that all the ingredients in you which will help you in grow in food and beverage companies and companies that have the agenda of nutrition, health and wellness as well. So some of the slides that we'll touch, and I'll also open floor for questions. If you have any question regarding food and beverage sector, we'll also talk about that too. So with this note, let's just begin. Okay, it got stuck a bit. Okay, the agenda for the today's session is prerequisites for nutritionists in the corporate world, because with food and beverage industry, there is a corporate world, this nomenclature attached to this word. Where does the nutritionist work in the food industry? What are the role of nutritionist and some of the major tasks that they need to perform in the food industry? And last but not the least is the topic regarding food labeling.
that we're going to touch today, which is very important with regards to food industry, because whatever information that the product or products have, it has to be evident or exhibited on the food label. So some of the guides that I'll show you today, and both have local and international snapshots. So we'll also have a look on that very slide too. So if we just start with the basic here, which is, I don't know why this is not going. This bar is somehow not going. Okay. So prerequisite. Okay, better. Prerequisites of nutritionists in corporate world. So with regards to academic professional experience, so first we talk about the academic degree that they need to require in order to practice their expertise in the food and beverage industry is a university degree in nutrition dietetics or life sciences field with nutrition specialization is a must-have. So this is with regards to the degree. They also promote and they also hire people with MSc in nutrition and dietetics as well. And obviously, if they are registered dietitian or equivalent, it's a plus in order to be present in any food and beverage industry. Experience is good to have, especially if you're starting. But if you're starting your career as a new candidate, then I'm sure experience is something which is missing. Your internship would count a lot. But if you're coming and joining food industry for some higher grade position, then experience in the food industry or any other food industry or public health nutrition organization is also an important ingredient, an important point as a prerequisite to be part of the food and beverage company or corporate world. Business product category support experience. So it's a paramount that we need to know about which business we're going to be in, what kind of product category that food and beverage company has, and what support that this department will provide to the different businesses in the company. Now, experience in the advocacy type of job or interaction with public KOLs will also help. So if we talk about the experience as a prerequisite in order to be in food and beverage company, if anybody has any kind of an experience where he or she is interacting with influencers or KOL is key opinion leaders of public health sector, or doing some kind of advocacy building session, that also is a plus point, and which corporate world and food and beverage industry really looks forward. Keen interest to work and progress in corporate setting. Now, this is something which is very important, and I would probably spend 2 minutes on this point, that, when you come into a food and beverage company. Sorry, do we have any question here? I could hear voices in the background. I cannot hear the question if it is, or a comment maybe. Okay, Jifa, should I continue? Because yes, please continue. It was a disruption. Okay. Not a problem. It wasn't a question. Okay. So I was saying that the keen interest to work in progress in the. Okay, thank you. So keen interest to work in progress in the corporate setting. At this point, I would want to delve deeper because, in food and beverage sector, it is quite different from the clinical setups where you go and you're expected to deliver on the technical bit of any information. Whereas in this setting, which is food and beverage sector, where you're expected to learn other departments' work and other part of the value chain as well. You're also expected to learn business and finances and also other, I would say categories, and which is not relevant to our degree and which is not relevant sometimes to our expertise. And this is something that you need to have interest in, be cognizant of. And once you are into the food and beverage sector, you need to interact with a lot of other departments, the members and colleagues, and interact fully and delve into their settings and understand how the company operates, because these companies have a larger infrastructure and then they really invest in that. It's very important that जितने भी लोग वैल्यू चेन के अंदर वो टीम फॉर्मेशन होती है, आपके अंदर ये कीननेस होनी चाहिए और ये ओपननेस होनी चाहिए कि आप
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फूड एंड बेवरेज कंपनी में जाके हर एक बंदे के साथ उनका काम भी सीखें, बिकॉज आई थिंक वो चीज़ें कैंडिडेट को बहुत हेल्प करती हैं, स्पेशली अगर आप हायर हो गए फूड एंड बेवरेज कंपनी में. सो वो आपका जो ओवरऑल जो आपका नॉलेज डिसमिनेशन वे होता है उसको बहुत इन्हांस करते हैं. Then they would not consider you after a few years as just technical people. They would consider you as a generalist technical people, and then you increase your worth in the food and beverage company. And I will also touch upon that very point towards the end of session when I'll share my, by grace of God, the success story. Okay, with this, the last point is food marketing and product development sound understanding. So we have studied food product technology and food microbiology and also biochemistry. So all of these subjects definitely have a lot of good role in making product development, and it becomes so much fun कि जब आपको ये knowledge सारा आपने पढ़ा होता है और आपने उसमें while studying आपने सिर्फ उसको रट्टा मारने के लिए नहीं पढ़ा होता, आपने उसके concept को understand किया होता है. Because when you go into the food manufacturing industry, you get to practice and you get to see all of those things. You know, I remember at the time when I was studying in College of Home Economics, so we used to study food technology, and you know, our teacher in our first class told us about different layers of grain, the endosperm, the germ, the fiber, and then you know, milling, and ये सब प्रोसेस हम लोगों ने पढ़े थे उस टाइम के ऊपर. और जब मैं मतलब फूड एंड बेवरेज कंपनी में गई और वहां जाके मैंने उन सब के वो प्रोसेस किस तरह से सीरियल फॉर्मेशन के अंदर कंपनीज किस तरह से कितनी तरह की मशीन्स होती हैं जहां से एक दाना गंदम का होता होता मिल होके कैसे वो एक फ्लावर बनाता है और फिर वो कैसे जो है वो एक प्रोडक्ट डेवलप हो जाती है. सो इट रियली हेल्प मी, एंड दैट वाज अ टाइम आई वुड प्रोबब्ली से अ गूज़बम्प पीरियड होता है जब आपने जो सीखा होता है, जो आपने पढ़ाई की होती है, और फिर उस पढ़ाई को आप इवेंचुअली किसी भी कंपनी में जाके वो पढ़ते हैं, वो देखते हैं. So and since I've also done my PGD, so मैंने ये चीज हॉस्पिटल सेटिंग में भी देखी है, लेकिन मुझे फूड एंड बेवरेज के अंदर भी उसने वो एक्सपीरियंस मुझे मिला. So that was a very remarkable time of my life. So we move on to the next slide. Okay, so we were talking about the prerequisites of the things that are required for nutritionists in a corporate world. With regards to personal self, there are few points that need to be present as a must-have for someone who wants to work in a food and beverage company. And I'm sure some of these points probably you would know and you would have. But when we talk about the corporate world, food and beverage company, you need to understand, because these companies have not much of our type of people. So when we go there, we become part of that team where they have professionals from the marketing field, and where the people from, you know, from the marketing school they're hiring. So in their curriculum, those people, you know, were taught all of those mantras, the rule of thumb that they need to apply, and they need how you guys can be active in a group. And being somebody technical, I myself, you know, struggled a lot initially at my start in the company. But you know, but with the consistent approach and with the consistency in improving oneself is continuously, you know, is kind of it had helped me, and it will help each one of you whosoever wants to pursue his or her career in food and beverage company, because there you are going into a diversified team, and for that you need to really explore this inner self, that आप वहां जाके सिर्फ टेक्निकल बिट नहीं बोलेंगे, आपको हर लेवल पे फूड एंड बेवरेज कंपनी में अपनी टेक्निकल साइड को ट्रांसलेट करना है इनटू अ जर्नलिस्ट टर्म. दे वुड प्रोबब्ली थिंक यू एज एन एलियन समटाइम्स, and but at that moment you need to absorb the culture, absorb the surroundings, and come up with those customized way you know of dealing with. अच्छा, ये सब चीजें तो कंपनी में आने के बाद होती हैं, लेकिन कंपनी में आने से पहले भी it had really helped me, and it will really help anyone जो कि ज्यादा that have a sound nutrition knowledge. This is very important, because once you have a good knowledge in you, आप किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी तरह के क्लाइंट्स के लिए. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना किसी भी साइंस को लेकर, जो कि वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम सबके हैं उस तरह से टेक्निकल साइड को लेकर, तो हम वो उस चीज को किसी भी तरह से लोगों के लिए और ऑडियंस के लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं. एंड दिस लाइज टू अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स. सो आई एम नॉट टॉकिंग और रिफरिंग हियर दैट वन शुड हैव उसको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, उसको उर्दू बोलनी आनी चाहिए. This particular point here is that
unless the next person is unable to understand what you are trying to say, is nothing what is with you. And this is called excellent communication skill. The person has to have that, I would say, drive of making the next person understand what that person is trying to explain to their audience. This is called good communication skill, which is very important if you want to work in a food and beverage company, because at हर मिनट में, तो मोस्टली जो कंपनीज होती हैं इनके इनके घंटे स्टार्ट 8:30 होते हैं और कभी भी शायद एंड नहीं होते. ये भी बड़ा एक ओवरवेलमिंग चीज है. और उस पूरे टाइम के दौरान आपको शायद हर वक्त ही कुछ ना कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ता है, और आप टेक्निकल लोग होते हैं. सो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आपको टेलर मेक करना आता हो, आपको कस्टमाइज करना आता हो. Decision making. So you're required to take decision based on the guideline standard. So you need to have these skills, obviously as a preliminary to be part of that company. You can't just expect that you will hire in a company और वो आपको problem solving skills बताएंगे. So ये सब जो trainings होती हैं, इनके बड़े courses होते हैं, और ये इनके subjects और इनके short courses आपको online भी मिल जाते हैं. So जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, आप टेड टॉक सुन के भी उन स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं. आप फॉर एग्जांपल इन फूड एंड बेवरेज कंपनी बहुत चांसेस होते हैं कि आप ऑफेंड हो जाएं किसी भी बात से, बिकॉज लोग आपको एट टाइम्स मुंह पे कह देते हैं, व्हाट आर यू, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर सच अ टेक्निकल XYZ, and then this sort of training, decision making skills and problem solving methods will help you in not being offended in such situation, and put across your point of view in a way that consumer would your audience would understand. Agility, very basic. We need to be more agile while contacting anyone. वो एक चीज हम बहुत सुनते हैं अक्सर कि and we call this why analysis. ये चीज ऐसे क्यों है, ये प्रोडक्ट ऐसे क्यों बनती है, इसमें इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हम ये इंग्रेडिएंट क्यों डालते हैं, अगर ये ना डालें तो ये डालेंगे तो क्या फर्क हो जाएगा. सो द एनालिसिस दैट वन नीड्स टू मेक, और ये वाली चीज आई टेल यू, ये एजिलिटी ना आपके पास पहले से होती है, तो आप जब कंपनीज में आते हैं तो आपको उस चीज से बहुत प्लस पॉइंट मिलता है. और ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जब आपकी इंटरव्यूज करते हैं और आपको हायर करते हैं, इनको ना सिखाया जाता है कि ये गेज कर लेते हैं, बिकॉज इन द HR एजेंडा उन कंपनीज के पास वो क्वेश्चंस पड़े होते हैं कि वो आपको कैसे गेज करेंगे आपकी एजिलिटीज के ऊपर. देयर मेंटल एजिलिटी, people agility, there are other stuff, and they ask question in order to just to check कि वो agilities में आप कितने refined हैं. Good soft skills without being offend, confident of course, because you're representing your company or you're presenting yourself in front of the company even before hiring. So you need to do the excellent time management. Time को manage करना, because you have to manage your team if you want to head any department, because you have a team members along, and then you also have your stakeholders, your peers. So you have to have an aptitude of work in a working groups. Willingness to learn and take initiative. I think हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है पहले. We have to be honest and accountable. I think this is very important. Honesty goes, with all kind of jobs. It is not just here. Sorry, my computer gets stuck after some time. So where does a nutritionist work in the food industry? So over here, we talk about the different types of food businesses and the role of nutritionist according to the businesses in the certain companies have. So small food business, they need to multitask and undertake other jobs beyond nutrition, such as food safety. So if it's a small company, you're expected to do work other than your basic nutrition. It is also regarding food safety, product development, quality assurance, covering areas like product labeling, compliance, and also product claims. Medium food business companies may be more specialized than with the small enterprises. But with the large food and beverage company, they are very specialized. So they have different departments. They have regulatory department, corporate affairs department, and NPD is basically new product development department for region. So this is how they kind of work, and they have they leverage their departments, each and every departments as well, so that a person only, अगर उस person को हमने सिर्फ hire as a nutritionist किया हुआ है, तो वो सिर्फ वही काम करे जो जिससे उसको हायर किया हुआ है.
पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने और चीजें नहीं सीखनी, वो और चीजें भी सीखे, लेकिन जब आप फोकस न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट पे होगा और लार्ज कंपनीज में जाएंगे तो फिर आप उस डिपार्टमेंट को थ्राइव करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं. Multinational organizations have a very specialized and regulated departments. So the NPD acronym is basically new product development, and PA is a professional association. For if it's a own nutritional food business, for example, if someone is owning a food and beverage business, and then the role of nutritionist is completely different. Then they are the one who are going to decide all those rules for everyone. So, and then the publication or presentation of human research, either be, I think there's a lot of scope for our field, but for the right type of knowledge, one should have the right type of knowledge in order to, excel her or himself in a different, in that particular field. अगर आपका शौक पब्लिकेशंस पे है और प्रेजेंटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसर्च पे है तो फिर आपको उसी एरिया में अपने आप को एक्सप्लोर कराना चाहिए. पर अगर आपका शौक जो है वो फूड एंड बेवरेज सेक्टर में काम करने का है और वहां पे आप डाइवर्सिफाइड टीम के साथ काम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अकॉर्डिंगली उन्हीं डिपार्टमेंट्स के साथ किस तरह से मिंगल अप करना है, कौन सी चीजें सीखनी है. सो दीज आर इम्पोर्टेंट. Then lobbying government to change food standard as well. This is a very important point, and I would probably think कि ये हम अपने public health sector पे ये इतनी अच्छी चीज कर सकते हैं कि while we work with the food and beverage companies, because they have the links, food and beverage companies have the link with the government sector, because this is how these companies operate in any country, and they are, उनके ऊपर ये लाजम होता है कि उन्होंने उस कंट्री के रूल्स को एडहर करना होता है. अगर ये फूड एंड बेवरेज कंपनी मल्टीनेशनल है तो भी लाजम है उनके लिए, और अगर ये लोकल कंपनी है तो भी लाजम है, वरना उनके ऑपरेशनल लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं. मैं इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए समझती हूँ कि जब आप इन जगहों पे आ जाते हैं और आपकी स्किल सेट परफेक्ट होता है तो आप रेगुलेटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशलाइज स्टैंडर्ड बना सकते हैं, आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं. इन द फूड एंड बेवरेज कंपनी वेयर आई वर्क, सो हम ऐसी बहुत सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, और मैं आई एम ड्राइविंग माई कंपनी सो दैट वी, बिकॉज आवर गवर्नमेंट का और हमारा और आप सबका एक गोल है कि हमारे मुल्क का न्यूट्रिशनल स्टेटस इनहैंस हो, और वो किसी क्वैक्स के साथ ना हो, कोई फैट डाइट्स के साथ ना हो, फैट स्टैंडर्ड के साथ ना हो, वो फैक्चुअल नॉलेज के साथ हो. और जब आप इन कंपनीज में आते हैं तो ये आपको वो प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे आप इन फोरम्स पे जाके ग्लोबली बात कर देते हैं. ऑब्वियसली इसमें देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल, बिकॉज यू नीड टू बी इन द सेक्टर. सेकेंड, यू हैव टू इंस्पायर योर ओन ऑर्गेनाइजेशन. जिस भी कंपनी में आप जाके काम करें, फूड एंड बेवरेज कंपनी में, उनको आपको जाके इंस्पायर करना होगा, क्योंकि वो उनकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट की होगी, तो देन ही वो लेके जाएंगे वो एजेंडा गवर्नमेंट के पास. अब आप किसी एक ऐसी F&B कंपनी में जाते हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन और हेल्थ एंड वेलनेस उनके एजेंडा में नहीं है, फॉर एग्जांपल, या न्यूट्रिशन को एनहांस करना उनके एजेंडा में नहीं है, तो फिर वहां पे मुश्किल हो जाता है. सो एट टाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट टास्क, बट we need to understand why we are there in this community, and then I think with this passion we can do this. We continue this with the next slide. Responsible for the role of nutritionist in food and beverage company, the role of continuing self-business partner and consumer nutrition education. So you get to practice this very point a lot in the food and beverage company, drive the nutrition knowledge aptitude of market employees, and run basic nutrition training. So you would be able to educate the employees of that company about nutrition, to add nutritional value and internal, external compliance in the product development, to drive corporate nutrition communication and activities, to enforce product compliance to internal policies as well, because you're authorized to enforce that compliance. So without your approval or without your consent, no label would be out in the market, because you are there to check all those do's and don'ts in order to facilitate your organization. To provide appropriate nutrition knowledge and guidance to support initiatives and communication for the company. So as I mentioned earlier, that if the company's agenda is on any nutrition area, then you have a bigger role in that. So आपका स्कोप वहीं पे बढ़ जाता है जहाँ पे वो एजेंडा कंपनीज का एक जैसा हो जाता है. You can be the spokesperson for nutritional content of the company. Obviously, किसी भी फूड एंड बेवरेज कंपनी में न्यूट्रिशनिस्ट अगर काम कर रही है और न्यूट्रिशन के ऊपर बात कर रही है, तो आपसे बढ़ के कौन अच्छी बात कर सकता है उस कंपनी के बारे में, और
ओवरऑल जो ये डिलेमा है दैट पाकिस्तान में मैल न्यूट्रिशन इस कदर ज्यादा हो चुकी हुई है कि उसको एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि वो ओवरऑल फूड इनसिक्योरिटी जैसे प्रॉब्लम्स को और मैल न्यूट्रिशन जैसे प्रॉब्लम्स को कवर कर सकें। न्यूट्रिशनल एडवोकेसी कर सकते हैं आप KOLs के, which is key opinion leaders, and also HCPs. So HCPs में doctors are part of HCPs. So while working in these companies, you get to talk to doctors and explain them about the facts of your product, and so that they become your spokesperson. So with this note, I'll move to the next important subtopic of my presentation, which is understanding food labeling and responsible communication to our consumer. So as you know, that nutritionists have a bigger role in any organization in devising the food labels. And while I discuss about food labels, nutritionists have a great role in the food and beverage company, because they know exactly what are the ingredients and nutrients present in that product, and they also knows all those guides and reference point कि ये कहाँ से कितना आयरन सारा दिन में खाना है, कितना प्रोटीन लेना है, और बच्चे का कितना प्रोटीन है और एडल्ट का कितना प्रोटीन है, और फिर वो एक प्रोडक्ट जो है ABC वो कितना आपको प्रोटीन देती है. सो आपने एक गाइड्स बनानी होती है जो कि कंज्यूमर को हेल्प करे और उनको समझ में आए. You don't need to complicate your labels. So nutritionists have a bigger role in defining food labels. So food labels are the first informative tool. We all know, consumer find it. That's a vehicle where the consumer go into your product and find about the goodness of the product as well. However, food labeling also represent a marketing tool as well. So it's a marketing tool, and which is why I often say that, marketing has to marry with the technical bits so that the good knowledge can be produced. So in the food and beverage company, you have to maintain that discipline कि marketing team जो है वो बहुत coherently और बड़े तरीके के साथ technical team के साथ काम करके कोई quack form ना करे और कोई fad को propagate ना करे label के ऊपर. For this reason, there is a growing research in the food labeling field and in the evaluation of its effects on consumer food operators in the whole market. So with this intent, there are a lot of research being done currently in many countries जहाँ पे वो food labels को consumer के लिए आसान करते जा रहे हैं. और हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे कि वो कितनी वाइड रेंज है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लेबल्स की जो कि पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिलती है. This is supported by a wide range of manuscripts published in recent years, for instance, with the specific purpose to better investigate how specific information on the food packaging may influence food purchases. Obviously, you would agree with me that, जितना आसान प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है और जितनी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के लिए अंडरस्टैंड और उसको रीड करना आसान होता है, वो प्रोडक्ट उतनी ही इजी होती है कंज्यूमर को डिसीजन मेक करने के लिए. So types of FOP scheme, front of pack, so we call it front of pack scheme, followed around the globe includes GDA, which is guideline daily amount, color coded GDA, Nutri-Score, health star rating, traffic lights, facts up front, keyhole, healthier choices, and healthy choice. So these are all the types of food labeling system that are present in the world mostly, and mostly ये बहुत सारी food and beverage company इन्हीं को ही practice कर रही हैं और इन्हीं में ही नई innovation ले आती हैं, renovation ले आती हैं ताकि वो consumer को अपने products की nutrition के बारे में educate कर सके. So we start with front of pack feature, which is called GDA. As you say, this is how this label looks like on the company's product. And Pakistan के अंदर कोई ऐसा food labeling law ही नहीं है. It is mostly Codex standard that they copy. But in many countries, they have food label law. तो वो कह देते हैं कि नहीं, you are only allowed to follow this standard or that standard. So फिर वो कंपनी को उस के हिसाब से फूड लेबलिंग स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है. This is a mandatory standard for Europe, for some markets, food and drink markets, especially in Europe. However, वहाँ पे भी अब नए स्टैंडर्ड आ चुके हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे. इसकी लॉन्च 2006 में हुई थी. इट्स अ वॉलंटरी एग्जाम्पल. उसकी वहाँ पे कंपनीज ने खुद से यूज की थी, बिकॉज एज आई सेड कि बहुत सारी कंट्रीज के अंदर रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी कंट्रीज में रेगुलेशंस नहीं हैं, तो कंपनीज को चाहिए होता है कि वो लेबल कंज्यूमर को पढ़ाएं. तो इसलिए वो ये रिसर्चेस जो हैं वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और जो की ओपिनियन लीडर्स होते हैं और जो एक्सपर्ट्स होते हैं फूड लेबलिंग के, वहां से उठा के फिर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. इस पर्टिकुलर लेबलिंग में की न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट,
ऑफ पर पोर्शन, तो पता चल जाता है कि जो पोर्शन वो कंपनी का प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है उसके अंदर आपको कितना कितना सब कुछ फुलफिल हो रहा है, सो दैट you can make informed choices. And now there's also a color coded GDA, which I would say it's more visible, more it looks nice. It is also mostly followed in UK. The launch date is 2013. It's also a voluntary initiative. उस particular law ने उनको enforce नहीं किया कि वो ये करें. UK Health Minister recommendation थी उनकी, और industry members ने उनको sign up किया throughout departments of health responsible deal pledge system. This is how the whole country or whole and different companies came up with this FOP scheme, in which they are allowed that they have to use color coding based on 100 gram per 100 ml with a portion cap for products 100 gram food or 150 ml. So this is how they're, अगर वो food है तो वो ग्राम में है, और अगर वो drink है तो वो ml में है. तो इस तरह से उन्होंने कंज्यूमर को एजुकेट करना है अबाउट दिस पर्टिकुलर लेबल एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट in the product. The other is called Nutri-Score. It is a mandatory labeling system in France, Belgium, Spain, Germany, and Netherlands. The launch date was between 2017 2019. As I mentioned, it's a mandatory agenda of the government. Predominantly, ये government drive कर रही थी ताकि लोगों को educate करें about the key nutrients that are important for public health. We all know कि energy की over consumption की repercussions क्या हैं, saturated fatty acids क्या करते हैं, sugars, sodium, protein, fat, fiber, and also if the product has fruits and vegetable content or it has nuts in it, it should be graded as healthier source as compared to if it has higher number of sodium or higher number of sugar, then it should be graded as E, which is it's not healthy. So आप ख्याल से इसको अपने खाने का हिस्सा बनाएं. The other is called health star rating. This is also a voluntary implementation of food labeling. Australia and New Zealand, they are, since their regulations are quite similar, so it is mostly practiced in that region, where they give a star rating, and they consider at least 3.5 star rating अगर आती है तो वो product is considered as healthy. और वो 3.5 स्टार रेटिंग के लिए भी इनकी जो पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि उसके अंदर कितना आपका फूड्स कंटेंट है, कितना वेजिटेबल्स कंटेंट है, और कितना उसके अंदर गुड फैट्स हैं एज कंपेयर टू रिफाइंड स्टफ एंड सोडियम और शुगर कंटेंट. सो ये जो हमारे वरीज हैं न्यूट्रिशनिस्ट के, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वरीज भी हैं. इसलिए वो कॉन्स्टेंटली ये जो एजेंडा है वो फूड कंपनीज में इंस्टिल कर रही हैं कि आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू इन एजेंडाज को, इन पॉइंट्स को एड्रेस करना है. तो बेशक एक कमर्शियल इंटरेस्ट होता है किसी भी फूड एंड बेवरेज कंपनी के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर डिफरेंट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनको हर वक्त वॉच आउट कर रही होती है कि ये कंपनी ब्रीच तो नहीं कर रही हमारे किसी एजेंडा के थ्रू. सो ये जो लेबल्स होते हैं ना, ये कंज्यूमर की को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, हम सबको, बिकॉज वी ऑल आर कंज्यूमर एज वेल. So that we would know up today, if I need to pick up anything for my kids, I would go for something which has a 3.5 or a 4 health star rating. So this is all there by the food and beverage company to kind of facilitate the consumer. और ये जो करते हैं और जो transparent रहते हैं, वो ही मेरे हिसाब से ethical food and beverage companies होते हैं, और उनको ये करना चाहिए. We move on to traffic lights. For me personally, मुझे ये system इतना अच्छा नहीं लगता, because that is very vague. You're kind of being very derogatory. You're jolting the consumer. This is not healthy नहीं, और ये बिल्कुल बहुत अच्छा fresh है. आप उनको 3 basic colors के साथ gauge करते हैं. अगर वो लाल है तो obviously वो healthy नहीं है, अगर वो amber या yellow है तो वो in between है, और अगर वो green है तो वो ठीक है. सो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेग सिस्टम है, बट अगेन ये भी मैंडेटरी सिस्टम था यूके के अंदर 2013 में ये प्रैक्टिस होना शुरू. अभी भी बहुत सारे यूरोपियन मार्केट्स के ऊपर आप इस तरह की चीजें देखते होंगे, प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह के लेबल्स आप देख रहे होंगे, जो कि मेरे लिए थोड़े से जरा वेग हैं, बिकॉज यू आर नॉट काइंड ऑफ रियली एजुकेटिंग द कंज्यूमर द डिटेल्स दैट व्हाई इट इज नॉट हेल्दी. और इसके ऊपर भी अगर आप ऑनलाइन रिसर्च भी करें तो वो बहुत बेसिक 3 चीजों के ऊपर है. अगर SFA ज्यादा है विदाउट, अगर फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ मिल्क, उसका SFA नेचुरली ज्यादा होगा, और अगर वो ज्यादा है तो वो अनहेल्दी कंसिडर कर लेगा. सो
बहुत सारी चीजों को फिर मैनुअली कंपनीज एंटर करती हैं और फिर आके कि वो तो नेचुरल एसएफए था, उसका उसमें डाला थोड़ी था हमने कोई गलत फैट. सो यू नो स्टफ लाइक, तो इसमें बहुत फ्लफ है अकॉर्डिंग टू मी. Then you also have front of pack uh, facts up front. So this particular guide is present in USA. It's a campaign introduced by 2013. The company Nestle has introduced it. पर voluntarily ये काफी चीजों के ऊपर, काफी लेबल्स के ऊपर किया. बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर कंप्लाई कर रही थी, बहुत सारी कंपनीज इसने इम्प्लीमेंट किया. And then Nestle is also one of the companies that has implemented in US, because that was probably at that moment the only system to educate consumer about what is present in front of in your product on the front of pack. Then there is other system called keyhole. Now this is something जो interesting है. Nordic, Sweden, Norway और Denmark में बहुत सारे products के ऊपर ये present है. जितनी भी food and beverage sector की companies हैं वहां पे वो उनको ये प्रैक्टिस करने को बोल रहे हैं. ये काफी ओल्ड डिजाइन था, बिकॉज 1989 में ये लॉन्च हुआ था, एंड देन इट गॉट एक्सपेंडेड टू नॉर्वे एंड डेनमार्क इन 2009 एज वेल. दिस इज अगेन आल्सो अ वॉलंटरी इनिशिएटिव. नॉर्डिक फूड अथॉरिटीज कंपनी ने इसको इनिशिएट किया था. ये क्राइटेरिया डिफाइन कर रहा था बाय अथॉरिटीज के आर सेट ऑफ 9 फूड ग्रुप्स, 9 फूड ग्रुप्स हैं, और उन फूड ग्रुप्स को अगर ये आपको की होल चाहिए दैट कंसिडर एज हेल्दी, तो आपके वो तमाम जो डाइवर्सिटी है, वैरायटी है डाइट में, वो होनी चाहिए. फूड लेबल विद की होल सिंबल कंटेन्स लेस फैट, sugar and salt and more dietary fiber than food products of the same type not carrying that symbol. So अगर उसी कंपनी की एक प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा फैट है, ज्यादा सोडियम है, तो उस पे जो अथॉरिटीज थी उनको अलाउ नहीं करेंगी की होल. सो की होल प्रेजेंट सिर्फ उस प्रोडक्ट पे होगा जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके ये जो 9 फूड ग्रुप्स हैं, ये कम वैरायटी होगी, उनके से कुछ ना कुछ बिट ली गई होगी, और वो लेस फैट के होंगे और उसमें ज्यादा फाइबर होगा. Now this is called healthier choices label. So this label is also present. Mostly Singaporean companies इसको practice कर रही हैं. इसकी launch date was also is 1998. It's again a voluntary initiative. HPP is the initiator, is a company, and they're also by the Food and Beverage Association of that particular country and regulators. They were told कि उनको 100 ml और 100 ग्राम के ऊपर ready to consume की information बतानी है. लोड इन शुगर, सॉल्ट. तो मोस्टली अगर आप देखें इन तमाम फूड लेबलिंग सिस्टम के ऊपर जो पब्लिक हेल्थ सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो शुगर, सॉल्ट, फैट, और जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो होल ग्रेन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. सो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मोस्टली ये तमाम जो चीजें हैं वो कंपनीज यूज करती हैं इन ऑर्डर टू मेक इट हेल्दी और अनहेल्दी, और उस कंपनी और वो जो कंट्री में वो ऑपरेट करती हैं उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर वो वाला लेबल और सिंबल यूज करती हैं सिस्टम का. This is probably, I think, the last one, which is says healthy choices. So Netherlands is the country which practiced that. It was launched in 2009. It's again a voluntarily. Different companies are initiating it. Campania, Friesland Food, Unilever. Key nutrition principles पे by category थे, like soup के ऊपर ये शुरू में चल रहा था, sauces के ऊपर आ रहा था, snacks पे और meals पे आ रहा था. हर किस्म की कैटेगरीज के ऊपर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो फर्क थी. डिजाइन प्रिंसिपल्स क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्ट ग्रुप डिवाइडेड इनटू प्रोडक्ट्स वी नीड एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट. सो दिस इज समथिंग जो उनका डिजाइन प्रिंसिपल था कि आपने जो उस प्रोडक्ट ग्रुप का जो क्राइटेरिया है वो डिवाइड किया व्हेन द प्रोडक्ट्स दैट नीड वी नीड एंड एक्स्ट्रा. सो मस्ट हैव्स एंड गुड टू हैव्स को उन्होंने करके, अगर इट्स अ मिल्क इट्स अ मस्ट हैव, इफ इट्स फॉर एग्जांपल एनी टाइप ऑफ सॉसेस और noodle mix or anything, then it's become an extra product. So this is how they kind of make it ये healthier है और ये थोड़ा watch out की जरूरत है इसके अंदर. Now this is again an interesting point that dietitians can help their consumer make better choices. Public health sensitive nutrients are considered as saturated fatty acid, trans fatty acid, sodium and sugar. And why there is a focus, because you know all the extra addition or extra inclusion of these type of fats in diet can cause cholesterol buildup and clog the arteries. In the sodium can increase, say there's an increased risk, and sugar, we all know the repercussions of increasing sugar in one's diet.
The adverse effect is obviously it could raise your bad cholesterol, decrease the good cholesterol. So it could also raise the blood pressure, and it could also raise your blood cholesterol. So there are higher risks associated with different types of NCDs, non-communicable diseases, if the consumption is higher. So nutritionists can really help food and beverage company in knowing all of that. आपसे ज्यादा बेहतर किसको पता होगा उस कंपनी में, या उस कंपनी में जब आने से पहले आप अपने इंटरव्यू के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस को डिसमिनेट करेंगी और प्रोपेगेट करेंगी, एंड यू वुड गो फॉर दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी इन अ कंपनी वेयर आई कुड एग्जिबिट द dilemmas, the adverse effect the society or Pakistan country has, and how can my knowledge and myself can impart this agenda in company's agenda, and we together create a good situation in Pakistan. So जब कंपनीज के और आपके एजेंडाज मिल जाते हैं, तो उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि आप हर पॉइंट पे अपने प्रिंसिपल्स के साथ एथिकल होके हमेशा फेयर चॉइस करें, जो कि कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रिशनिस्ट से बेहतर कोई नहीं जानता कि कितनी इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन हेल्दी रहने के लिए। और सबसे बढ़ के किसी भी डिजीज की ऑब्वियसली बाकी अल्लाह की विल है, आप प्रिवेंशन कितनी अच्छी कर सकते हैं अगर आपकी डाइट बेहतरीन होती है। आप बहुत सारी बीमारियों का ऑनसेट अच्छी डाइट से रोक सकते हैं। मुझे इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत वैसे भी नहीं है, बिकॉज हम सब लोग एक्सपर्ट्स हैं और हम जानते हैं। सो जब आप इस नोशन के साथ और इस पैशन के साथ अपने करियर का तायुन करते हैं, चाहे वो क्लिनिकल सेटअप हो, चाहे वो चाहे पब्लिक हेल्थ हो, चाहे वो फूड एंड बेवरेज कंपनी हो, जब आपका प्रिंसिपल क्लियर होता है कि आपने जाके कंज्यूमर की हेल्थ को पॉजिटिविटी देनी है, तो आप किसी भी जगह जाके वो चीज कर लेते हैं। एंड दिस इज द स्टैट्स, यू नो, ये कंपनी, ये बड़े बच्चे सबके मिक्स हैं आपके सामने है स्क्रीन पे। किस कदर तबाही है कि जब आपके मुल्क के अंदर लोग एक ऑयल को 600 दफा यूज करते हैं इस बचत के लिए कि शायद ये इतना महंगा है मैं दोबारा नहीं डालूं। और मैं कभी थक जाती हूँ बताते हुए कि शायद जो आप अभी 2 रुपए बचा रहे हैं और इस ऑयल को नहीं फेंक रहे, तो शायद जो इससे बढ़ के जो खुदा ना खास्ता कार्सिनोजेनिक चीजें हैं मौजूद उसके अंदर, और वो जो ट्रांस फैटी एसिड कंटेंट में भी उसका इंक्रीज कर सकता है और कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं, वो उनकी डाइट के साथ क्या हशर करेगा। जब प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा होता है, जब गर्म चीजों को लोग शॉपर बैग में डाल के घरों से चने लेके बाजारों से लेके घर आ रहे होते हैं, विदाउट नोइंग के ये अवेयरनेस देना गवर्नमेंट का काम है, ये अवेयरनेस देना कंपनीज का काम है कि वो लोगों को बताएं कि ये कौन सी चीज उनकी डाइट के लिए हेल्दी है और कौन सी चीज उनकी डाइट के लिए नहीं हेल्दी है। और आपसे आपसे बेहतर ये चीज कौन बता सकता है उनको, बिकॉज आपको एक एक बारीकी पता है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट वैल्यू चेन, कि आपने कहाँ पे कौन सी चीज से लिए पहले अपनी कंपनी को रोकना है और फिर आपने कंज्यूमर को वो सही और फैक्चुअल बात बतानी है। You know, with this, this is probably my last slide of the presentation is the success story. Again, this is for me a small success story. When I got into a company, and it was I was very young. I think आप बिल्कुल जब कॉलेज से निकलते हैं और जब पीजीडी करते हैं, उस वक्त जब मैंने कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और मैंने अपनी पीजीडी कंप्लीट की, तो आप कितने क्या होते हैं, और हमने अपने उस टाइम पे कोर्स के अंदर कोई मार्केटिंग नहीं सीखी होती है। So I think Allah has been very kind on me, and I'm very thankful to my college and my teachers. They are my mentors. Whenever I see them today, मैं उनको हमेशा कहती हूँ, बीट मैम गजाला, मैं सईदा गनी, मतीना ज़िया, anybody, because I think कि जो भी whatever I am today, I owe to them. I owe to my college and I owe to all my teachers, because कैसे हर टाइम पे विद लिमिटेड रिसोर्सेज, आई रिमेम्बर, मुझे याद है, एंड शिफा यू वुड एग्री विद मी, हम लोगों ने एमएससी में अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती थी, एंड वी यूज्ड टू गो इनटू दैट स्मॉल रूम, जो प्रोजेक्टर रूम होता था, वहां पे जाके हम रिपोर्ट प्रेजेंट करते थे, और अक्सर वहां पे हमें कॉल आउट करना पड़ता था कि हमने प्रेजेंट करनी है। और अक्सर बहुत लिमिटेड, हम लोगों को प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी सिखाई नहीं जाती थी उस टाइम पे, लेकिन हमारा जो कॉलेज था वो हर लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद हम लोग को वो सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा था कि हम प्रेजेंट करें, हम थीसिस कर रहे हैं तो हम उसको प्रॉपर्ली करें, हम अपने वाइवा को सीरियसली लें और अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के सामने अपना पॉइंट ऑफ एक्सप्लेन करें। तो इसका मतलब है कि हमारे कोर्स के अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे जिसने मुझे हेल्प किया, और उस हेल्प की वजह से
जब मैं फूड एंड बेवरेज कंपनी में आई तो मुझे बहुत सपोर्ट मिली. आई स्टार्टेड स्मॉल एज ए culinary expert because obviously at that time I didn't have an experience. Thank you to Ma'am Ghazala, who has sent my CV to the company where I work in. And I got in because of two things, the good teachers and because of my institution. Because that institution has taught me all those stuff that were required to start off my career in a food and beverage company. Later, उस कंपनी के अंदर जाके वो सब तरीके जो हमने करने हैं वो मैंने आपको उसके बारे में बताया. और ये मोस्टली कंपनीज में एक ही तरह से ऑपरेट होते हैं. फिर जिस भी सेक्टर में आप जाएं वहां जाके आप हालात को देखें, वहां पे कैसे काम होता है उसको देखें. जब मैं इस कंपनी में आई तो मुझे लगा कि ये जो कलनरी कंसल्टेंट है जहाँ पे मुझे हेल्दी रेसिपीज बनानी है, ये मेरी आखिरी डेस्टिनेशन नहीं है. बिकॉज एक डिपार्टमेंट इस कंपनी में एग्जिस्ट करता है जो कि न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस डिपार्टमेंट है. वहां पे न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बैठा हुआ और नहीं बैठे हुए. क्यों नहीं बैठे हुए? आई नीड टू क्रिएट दैट नीड इन द कंपनी सो दैट दे वुड कंसिडर, not me, any nutritionist for that position. So I have to carve that pay. कंपनी उससे पहले बहुत अरसा पहले वहां पे किसी भी और सेक्टर के लोग लाके देख रही थी. सो आपने अपना जो रास्ता होता है वो कंपनी में जाके खुद से क्राफ्ट करना होता है. while creating, while आपने अपनी battles pick and choose करनी होती है. आप हर जंग लड़ने नहीं जाते और आप हर नॉलेज को पकड़ नहीं लेते. आपने उस कंपनी में जाके अपनी बैटल्स चूज करनी होती है, अपने नेटवर्किंग स्किल्स बनानी होती हैं और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है. आपको, मुझे शायद बहुत अच्छी मार्केटिंग नहीं आती थी और मुझे शायद जर्नलिस्ट रोल करना, और शायद मेरे में कॉन्फिडेंस की भी कमी थी उस टाइम पे जब मैं 24 साल की उम्र में एक इतनी बड़ी कंपनी में आके मुझे बिठा दिया गया था. और जो जिस जगह पे मैं आ गई थी वो मुझे 1 साल के बाद तंग करने लगी थी कि भाई वो ये कंपनी में ये चीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो न्यूट्रिशन सही तरह से प्रैक्टिस नहीं हो रही है. सो एट दैट मोमेंट विद माय नॉलेज दैट आई वाज वेरी लकी बीइंग टॉट बाय माय इंस्टीट्यूट, उसने मुझे बहुत हेल्प किया. और आई बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह आई हैव मैनेज्ड टू पेव दैट पाथ where today I think for last 3 years, alhamdulillah, by grace of Allah, I am heading the department of nutrition, health and wellness today. It is again, I owe this all to Allah. After Allah, it is my teachers, my organization, my school, my college, and my above all, I think, जो एक वहाद बंदा होता है जो आपके लिए रास्ता क्राफ्ट कर रहा होता है, is due respect Miss Ma'am Ghazala. So a degree is a license to learn on your job. Obviously वो आपको बहुत help कर रही होती है, but sometimes it's not just a document that kind of, बस कि वो अब आ गए हैं तो अब आपको अब आ गए. जब पढ़ाई की थी तो हम बहुत पढ़ते हैं क्रॉस के टेल्डो को, और हम बहुत रेफर करते हैं अमेरिकन डाइटेटरी एसोसिएशन, अमेरिकन न्यूट्रिशन गाइडलाइंस को बहुत एसोसिएट कर रहे होते हैं. हमारे जो जब हम डिप्लोमा कर रहे थे तो हमारे साथ अक्सर आइवा यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आके हम लोग को बताते होते थे. लेकिन जब आप कंपनीज में आ जाते हैं तो हर कंपनी का रूल फर्क होता है. अब यहाँ पे जब मैं आई कंपनी में तो ये लोग कोडेक्स को फॉलो करते थे, ये एफ्सा को फॉलो करते थे, विच इज यूरोपियन फेडरेशन, एंड देन WHO को बहुत देखा जा रहा होता था. उन चीजों को प्रैक्टिस करने का मौका मिला. अगेन वही बात है कि आप जब यू हैव टू फर्स्ट नेल योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू एक्सपैंड योरसेल्फ. तो पहले 2 साल 3 साल मैंने अपने आप को नेल किया था ऑर्गेनाइजेशन में. आई हैव क्रिएटेड अ नीड in the company, and then I have इतनी कंपनी के अंदर आपके लिए एक आसानी नहीं हो जाती है जब आप सिर्फ ओनली एक्सपर्ट होते हैं और आपका नॉलेज सही होना, तो फिर आप लोगों को बता पाते हैं सही बात. सही न्यूट्रिशन ये नहीं है कि सेब के अंदर आयरन होता है तभी वो काला हो जाता है. सेब के अंदर आयरन होता ही नहीं है, ट्रेसेस में होता है, वी ऑल नो. लेकिन मेरी कंपनी में वो बात बड़ी नोन थी कि सेब में आयरन होता है ना, तभी तो वो काला हो जाता है. तो मैंने कहा फिर आलू को क्या होता है, तो आलू में भी आयरन होता है. मैंने कहा अच्छा, तो फिर आयरन डेफिशिएंसी पाकिस्तान में होनी नहीं चाहिए बच्चों को, जितने आलू और जितने चीजें हम ये खाते हैं. तो इस तरह की छोटी छोटी नीड, छोटे छोटे से आपको डीमिस्टिफिकेशन करनी पड़ती थी जो मैंने की. और उसने मुझे चले 10 साल 12 साल लग गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टेडी समटाइम्स विन द रेस. आई हैव एक्चुअली वन दैट रेस. Again, it would have not been possible, and I've been very lucky to have good teachers, good institute, good organization,
and Allah was very kind, and I wish you all good luck, whosoever wants to pursue his or her career in food and beverage company, or even if they want to any other sector. So thank you very much, Shifa, and thank you very much everyone for this opportunity, and good luck to all of you. Thank you so much, Ambreen. So you are yet another flower of this home economics bouquet. अभी कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि आप कराची से हैं, लाहौर से, तो for my participants, Ambreen is proudly a product of College of Economics Law. और ये जो आपने सुनी, ये हमारे साथ ही वहाँ से किया है. और यकीनन मेरा सारा प्रेजेंटेशन सुन के आई वाज थिंकिंग कि दिस इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप अगर इस तरह इंडस्ट्री में काम करते हैं, वेयर यू कैन एक्चुअली ब्रिंग चेंज. क्योंकि हम अब भी क्लिनिकल उसमें भी सेटअप में जो होते हैं, तो हम सिर्फ मशवरा दे रहे होते हैं, एडवाइस कर रहे होते हैं. बट ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात बताई कि यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन रेगुलेशंस या लेजिस्लेशन हुकूमत के साथ, जैसे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. सो इंडीड इट कैन ओपन मेनी डोर्स फॉर एक्चुअल एक्शन व्हिच कैन बी टेकन टू ब्रिंग चेंज इन द लाइट ऑफ आवर जनरल पब्लिक. सो बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही अच्छा लगा. और सवालात जो हैं वो आए चले जा रहे हैं, बिकॉज पीपल आर वेरी एक्साइटेड एंड आई थिंक दे हैव लर्नड अ लॉट. सो मैं आपको सवालात बताती जाती हूँ. अमरीन, इन्होंने इन्होंने कहा है कि 100% डेली वैल्यूज ऑन वन ऑफ योर स्लाइड्स. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डेली वैल्यू एंड एनआरवीज? ओके, सो प्रॉब्ली स्लाइड पे तो रेफरेंस आपने कहीं से उठाया था, मैं आपको जरा डीवी और एनआरवी के ऊपर बता देती हूँ. सो क्या होता है कि जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं ना, उनके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए. फॉर एग्जांपल, जैसे जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ, वहां पे हम कोडेक्स फॉलो करते हैं एडल्ट्स के लिए, जहाँ पे जो एडल्ट्स होते हैं उनको हम 12 साल से ऊपर कंसिडर करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल वो 100% रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, अव्वल तो ये फोकस होता नहीं है कभी भी, वो प्रॉब्ली इट्स अ डमी रेफरेंस पॉइंट. सो अगर आपने वो 100% फुलफिल करा है तो वो डीवी है, सॉरी वो एनआरवी है, बिकॉज कोडेक्स का यूनिट होता है वो एनआरवीज होता है. और अगर फॉर एग्जांपल आप डीआरआईज फॉलो करते हैं, डाइटरी रेफरेंस इंटेक, जो कि ये भी यूएसए की एक गाइड है जो कि हम लोग किड्स के लिए फॉलो करते हैं. सो वहां पे हम डीआरआई का या डीवी का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से बहुत सारी, और जैसे हमारी कंपनी की भी जो बहुत सारी अदर कंट्रीज में वो ऑपरेट करती हैं, वहां पे हर कंट्री का अपना वे होता है कि आप किस तरह से उस न्यूट्रिएंट को जो आपकी प्रोडक्ट में है उसको कंज्यूमर के लिए समझाते हैं. और उसको ना आपने पूरे लेवल पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट भी कराना होता है कि ये हम इस गाइड से बता रहे हैं. Okay, so the next question is that the term transgenics is mentioned in one of your slides of food labels. Could you help elaborate the term for our understanding? Transgenics. एग्जैक्टली, ट्रांसजेनिक्स जो होती है वो बेसिकली ये एक टर्म है जिसमें जो कि फूड लेबल्स के लिए इस्तेमाल होती है. ट्रांसजेनिक रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन एक्सोजेनस और मॉडिफाइड जीन. सो अगर आप लोगों ने जीएमओस के बारे में सुना, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत सारी कंपनीज यूज कर रही होती हैं, और उनको मना किया जाता है, और ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो वहां पे ख्याल करें उनको एलेबोरेट करने के अंदर. तो आपको अगर फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ प्रेजेंट ऑफ ट्रांसजेनिक्स, so you need to inform the consumer about its hazard, because it is considered something which is not healthy. Sometimes it's basically an organism that have altered genomes are known as transgenic. And perhaps the most famous examples are food crops like soya and corn that have been genetically modified, GMOs, for पेस्ट एंड हर्बिसाइड. सो अगर किसी भी प्रोसेस के थ्रू वो प्रोडक्ट लेबल में मौजूद है, सो आप में ट्रांसजेनिक का वर्ड वहां मेंशन करना होता है कंज्यूमर की चॉइस के लिए. Okay, so another question is, how is Nestle milk pack different from Nestle A2 milk? And ये वाला सवाल है, A2 milk से कैसे different है Nestle? So this is now focusing on one of the Nestle product, milk pack. So milk pack, जैसे कि आपको पता है कि जो दो तरह की काउज होती हैं, एक A1 प्रोटीन होती है बीटा केजीन, एक A2 प्रोटीन होती है. अब कुछ रिसर्चेस रिसेंटली अराइव हुई हैं जो ये कहते हैं कि जिन काउस के अंदर A2 प्रोटीन होती है, A2 बीटा केजीन प्रोटीन होती है, वो वाला जो मिल्क होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है. यहाँ पर तो ये बहुत रेयर कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप बाहर देखें तो जैसे चाइना के अंदर जो
A2 बीटा केजीन प्रोटीन के साथ जो दूध की प्रोटीन होती है बीटा केजीन, वो काउज में जेनेटिकली इस तरह से उनको नर्चर किया जाता है नेचुरली, ऑब्वियसली उनमें कुछ इंजेक्शंस या हार्मोन्स नहीं लगाए जाते। सो जो मिल्क पैक A2 मिल्क है उसके अंदर A2 बीटा केजिन प्रोटीन है विच मेक्स इट इजी टू डाइजेस्ट, बट दैट डज नॉट मीन कि A1 प्रोटीन वाला जो मिल्क पैक नॉर्मल है उसके अंदर वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं है, बिकॉज अभी तक कोई साइंस ये नहीं कहती कि A1 से डाइजेशन खराब होती है, लेकिन एक साइंस अच्छा। ये जरूर कहती है कि बीटा केजीन A2 बीटा केजीन है उससे डाइजेशन शायद बेहतर होती है। जी अच्छा, इसमें मेरा ये अपना सवाल ये था अमरीन, बिकॉज आई हैड एन अंडरस्टैंडिंग कि पाकिस्तान में जो टाइप हमारे पास जो टाइप ऑफ मिल्क यूज होता है इट इज यूजुअली A2 टाइप, A1 की यहाँ पे नहीं होती ज्यादा इस किस्म की गायें या भैंसें। हमें, हाँ जी इज हमारे इट पास ट्रू? मिक्स है शिफा। हाँ जी हमारे पास ना हाँ। मिक्स है दोनों है, लेकिन अच्छा, जो अब फॉर ओके। एग्जांपल जो नेस्ले के पास है ना, हमारे पास जो काउज, बिकॉज अब हम ज्यादातर काउज की तरफ आ गए हैं, बफलो मिल्क का कंजम्पशन कम होती जा रही है, स्पेशली कंपनीज है जहाँ ठीक है। पे बहुत मासेस में कमाना, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने दूध लेना होता है। सो वहां पे ना हम्म। काउज की जो मिल्क देने की कैपेसिटी है वो बफलो से बेहतर होती है। सो इधर जो हम्म। काउज हैं और बफलोज हैं वो मिक्स देती हैं, लेकिन अब रीसेंट स्टडीज जो हमारे पास आई, मैं आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर भी कर दूंगी, उसमें पता चला कि शायद A1 और A2 दोनों मौजूद होते हैं। सो अगर आपने ओके। इजी डाइजेशन का क्लेम करना होता है और ये कोडेक्स का लॉ है, तो आपको सिर्फ हम्म। ऐसी काउस चाहिए जो सिर्फ A2 प्रोड्यूस करें और उनका A1 का लेवल बहुत ओके। कम हो। तो वो फूड लॉ के बेस ओके। पे फिर हमने ऐसे वो A2 को प्रोड्यूस किया। सही, ठीक है। Ms. Shahgul is appreciating that the session was worth attending. Maruf Imtiaz is asking how can one start working in food industry, like as an intern, after do we have to send a CV after ओके studying nutrition from Dow? ओके सो इस पर सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जब आपने स्टार्ट करना होता है तो एक तो कभी भी रुकिए मत, कभी भी अगर आपने फूड एंड बेवरेज में जाना है तो आप कभी भी रुकिए ना कि अभी जब हमें कॉल आएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि इंडस्ट्री बहुत छोटी है और हमारी नीड हमें खुद ही अराइज करनी है। सो जो भी आप काम जिस भी कैपेसिटी में कर रहे हैं ना वो आप करते जाइए, अपना काम मत छोड़िए, चाहे वो आप हॉस्पिटल्स में इंटर्नशिप कर रहे हैं, चाहे वो आप होटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इन फूड बेवरेज कंपनी में अप्लाई करते हैं ना वो आपसे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि भाई कहाँ से काम करके आए हो। तो पहली बात तो ये कि अपनी नजर रखें कि कंपनीज के ऊपर, कंपनीज में कौन सी पोजीशंस अराइज हो रही हैं। ऑब्वियसली इन दिस कंपनी आई कैन हेल्प यू इन दैट, वेयर एज फॉर अदर कंपनीज भी आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव रहा करें, वहां से चीजें देखते रहा करें कौन सी कंपनी का एजेंडा है न्यूट्रिशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जिस कंपनी का एजेंडा न्यूट्रिशन नहीं है वहां पे हो सकता है आपकी जरूरत ही ना हो वहां पे। सो आपको ना ये चीज करनी है, प्लस इंटर्नशिप जरूर करें। इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी हर, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी जो है वो इंटर्न्स को बहुत प्रमोट करती है, इन माई सेल्फ टू। सो हमने भी अभी बड़े वर्चुअल इंटर्न्स भी करवाए हैं न्यूट्रिशन के अंदर, हमने उनकी इंटर्नशिप्स करवाई हैं और फिर हमने उनको फैक्ट्री पे भी कराया, और ये सारा वर्चुअल इंटर्नशिप था शिफा। उसमें बड़ा हेल्प है कि कैंडिडेट को ऑफिस जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे अब कोरोना टाइमिंग्स में हैं और हम लोग वर्चुअली फैक्ट्रीज को भी देख लेते हैं और वहीं पे अपने लैपटॉप पे कैमरा ऑन करके सब चीजें देख लेते हैं। सो बस अपना काम जारी रखें, अपनी लगन जारी रखें, ड्राइव कभी खत्म ना होने दें, और इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है तो आप जरूर पहुंचेंगे अपनी मंजिल पे। बिल्कुल, कोरोना हैज बीन ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर यस अस ऑल। बहुत सी नई बिल्कुल। चीजें सिखा दी हैं और बड़े ही स्ट्रगलिंग टाइम्स में कैसे सरवाइव करना है। देयर आई वुड टेक जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन बिकॉज देन वी हैव टू मूव टू आवर क्विज। Fruit juices in Pakistan contain sugar more than natural content. Do you think that these juices are more frequently in use as compared to fruits and increasing number of cases of weight gain and NCDs? नेवर, Okay. being the company person myself, I am saying never. They are not the replacement of fruit. And it's not just डब्बे वाला जूस शिफा, it is any juice I would say, और ये हमें सिखाया गया Okay. था। बिकॉज किसी भी जूस में फल से बेहतर नहीं है, बिकॉज यू लूजिंग आउट सो मच। और जहां तक इन कंपनीज का एजेंडा आ गया, मैं आपको उस पर बता देती हूँ कि ये सारा ड्राइव होता है शिफा कंज्यूमर से। कंज्यूमर को हम जब एक ऐसा जूस देते हैं ना जिसमें शुगर नहीं होती है, वो कहता है रिजेक्टेड। आप बताएं वो कंपनी कैसे लॉन्च करेगी? इट इज अस who are capabling or who are empowering these companies to launch product which has high sugar. सो ये अवेयरनेस क्रिएट करना बड़ा जरूरी है गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर भी, कि लोगों को बताएं शुगर ज्यादा खाने से ओबेसिटी होगी। आपने कहा वो वर्ड्स,
सो ये डब्बा वाले जूसेस जो हैं ये बिल्कुल रिप्लेसमेंट नहीं है. और दिस आई से क्वाइट लाउड इन माय कंपनी टू, एंड दे डोंट लाइक मी मच फॉर दैट, बट दैट्स द फैक्ट, व्हिच इज व्हाई आप देखिए कोई भी जो जूस है हमारी कंपनी का वो हम लोग डेली पीने पे प्रमोट नहीं करते. कभी आपको ये कम्युनिकेशन नहीं आएगी कि डेली पीने से आपका इतना फ्रूट कंटेंट हाई अचीव हो जाएगा. आई वुड नेवर लेट दैट हैपन, एंड आई एम alhamdulillah sitting in that position where I can tell them not to do this, and you will never see Nestle saying this, okay, you drink this juice, this is a replacement of one fruit. I would never let that happen, don't worry, I have that in me. बिल्कुल ठीक, जैसे आपने कहा भी अपनी सेशन के दौरान कि ऑनेस्टी जो है ना उसको कभी भी नहीं छोड़ सकते, एंड बीइंग ट्रू टू योर क्वालिफिकेशंस और जो भी आपने सीखा है. सो अब मैं फाइजा कमाल आपकी तरफ आ रही हूँ सो दैट यू कैन स्प्रेड द क्विज प्लीज. फाइजा, you are the host now. Ji, okay. Now I will start the poll. So guys, there will be a quiz on the screen, and you will have to quickly answer those questions that will appear on your screen. Dear participants, you will have only a limited time to answer that question, and then the next question will appear. So you will be giving a few seconds only. Here is the second question. Food labeling is a market tool which can influence which of the following? Once again, I remind you, you have to be quick in answering the questions because they will appear for a limited time only. Here is a question number 3. There are 30 seconds. Okay, 10 seconds. There are dash main types of front of pack scheme followed around the globe. Here, question number 4. Key nutrition principle followed by GDA is. Question number 4 has disappeared. Next question will be coming in a while. Question number 5. Which of the following FOP features on high, medium, and low content of nutrients? We have around 8 questions only, so we are left with only 3. Here is question number 6. Question number 7 is the leading cause of death among the top 10 diseases in Pakistan is, and now we'll wait for the last question. Which of the following has documented evidence to be linked with cholesterol buildup in the arteries? Yes, we are done with the polling. Okay, so we are done with the questions. Some of the participants have sent us concerns that they didn't receive the questions. I don't know what could be the problem, लेकिन site पे polls के अंदर आपको देखना था. Some participants have problem if their network is not strong, so उसकी वजह से हो जाता है. हाँ, ये हो सकता है बिल्कुल. So it was a good session. और कोई चीज हमारी रह तो नहीं गई ना? We have done with the quiz and that's it. Now we are done. Remaining thanks बस रह गए हमारे. जी. So I hope every one of you has learned a good deal from this session और एक different angle आपको देखने को मिला है. और सिर्फ हमने clinical side पे जाके ही काम नहीं करना होता. There is a lot more जो है वो करने को हमारे पास दुनिया में मौजूद है. Sky is the limit for the dietitians. So Ambreen, once again I would like to thank you a lot. आपने इतना टाइम निकाला और कुछ आप पर्सनल रीजंस की स्ट्रगल भी कर रही थी. सेहत आपकी, कुछ अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे. सारे डिफिकल्ट टाइम्स है आजकल, ये बस अल्लाह ताला हमें इस वबा से निकाले ताकि हम फिजिकली भी हम लोग सब अपने अरेंज कर सकें उसी तरह से. तो थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू मैडम गजाला फॉर ज्वाइनिंग अस. आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के हमारे पास आई. आई वाज सेइंग कि आप पार्टिसिपेंट्स में शुरू से मौजूद रही. एंड थैंक यू एवरीबडी, सारी PNDS की टीम, लाहौर, कराची एंड फ्रॉम अदर सिटीज, इस्लामाबाद एंड अदर सिटीज. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. सी यू नेक्स्ट टाइम इन सम अदर सेशन इंशाल्लाह. ओके जी, अल्लाह हाफिज. Thank you very much, Shifa. Thank you very much, everyone. Allah Hafiz. Thank you.